श्री गणेशाय नमः। अथ त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः। नन्दीश्वर उवाच सनत्कुमार सुप्रीत्या शिवस्य परमात्मना अवतारं शृणु विभो जटिलाहं सुपावनम्। पुरा सती दशकन्या तयित्वा देहं पितुमखे सब पित्रानादृता यज्ञे मेनायां हिमबूधरात् सा गत्वा गहनेरण्ये तेपे सुविमलं तपः शङ्करं पतिमिच्छन्ति सखीभ्यां संयुता शिवा तत्पः सुपरिशाथ सप्तर्षीन् प्रेष्य शिव तपस्थानं तु पार्वत्या नानलीलाविशारद ते गत्वा तत्र मुन्या परिशां चक्रुरादरात् तस्याः सूयतन्तो नैव सर्वथा अभवंशते तत्र गत्य शिवं नत्वा वृत्तान्तं च निवेदत तदा ज्ञामसमुत्प्राप्य सर्वलोकं जग्मुरादरात् गतेषु तेषु मुनिषु स्वस्थानं शङ्कर स्वयं परिशीतुं शिवावृतमेच्छत सूतिकर प्रभु सुप्रसन्न सत्पस्वी छाशमनादयमीश्वर ब्रह्मचर्य स्वरूपो भुक्तदादुतर प्रभु अतीव सत्वीरो विप्रदेहधारी स्वतेजसा प्रज्वलन मनसा हष्टो दण्डिछत्रिमहोज्ज्वल घृतवेवं जाटिलं रूपं जगाम गिरिजावनम् अतिप्रीतियुत शम्भु शङ्करो भक्तवत्सल तत्र पश्य तिष्ठां देवी सखिभिः परिवारितां वेदिकोपरि शुद्धान्तां शिवामिव विदुकलां शम्भुनिरीक्ष्यतां देवी ब्रह्मचारी स्वरूपवान् उपकण्ठं ययो प्रीत्या चोत्सुकी भक्तवत्सल आगतं सा तदा दृष्ट्वा ब्रह्माण्डं तेजसा धृतम् अङ्गेषु लोमशं शान्तं दण्डचर्म समन्वितं ब्रह्मचर्यधरं वृद्धं जटिलं शङ्खमङ्गलम् अपूज्यत प्रकृत्या सर्वपूजोपहारके ततः सा पार्वती देवी पूजितं पर्यामुदा कुशलं पर्यपृच्छतं ब्रह्मचारेण मादरात् ब्रह्मचारी स्वरूपेण कस्तवं हि कुत आगत इदं वनं भास्यसीवद् वेदविदाम्बर नन्दीश्वरुवाच इति पृष्ठस्तु पार्वत्या ब्रह्मचारी स वेद्विज प्रत्युवाच दुःखं प्रीत्या शिवा भावपरीक्ष्या ब्रह्मचार्युवाच अहमिच्छाभिगामि च ब्रह्मचारी द्विजक्षवे तपस्वी सुखदोन्येषामुपकारी न संशय नन्दीश्वर उवाच इत्युक्त्वा ब्रह्मचारी स शङ्करो भक्तवत्सल तस्थीवानुपकण्ठं स गोपायनुपयात्मनः ब्रह्मचार्युवाच
किं ब्रवीमि महादेवी कथनीयं न विद्यते महानथ करं वृतं दृश्यते विकृतं महत् न वेव्यसि सदोगसाधने सुखकारणे महोपचार सदोगे वृद्धेव त्वं तपस्यसि का त्वं कस्यामि तन्या किमर्थ विजने वने तप्शरसि दुर्धश मुनिभिः प्रतात्मभिः नन्दीश्वर उवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा प्रहस्य परमेश्वरी उवाच वचनं प्रीत्या ब्रह्मचारिण मुद्मम पार्वत्युवाच शृणु विप्र ब्रह्मचारी न मदवृतमखिलं मुने जन्म मे भारते वर्षे साम्प्रतं हिमवद्ग्रहे दक्ष गृहे जन्म सती शङ्करकामिनी योगेन त्यक्तदेहाहं तातेन प्रतिनिन्दिना अत्र जन्मनि सम्प्राप्तः सुपुण्येन शिवो द्विज मातय्त्वा भस्मसात् कृत्वा मन्मथं स जगामः प्रयाते शङ्करे तापाद्रवी ऋताहं पितुगृहात् आगच्छमत्र तपसे गुरुवाक्येन संयता मनसा वचसा साक्षात् कर्मणा पतिभावत सत्यं ब्रवीमि नो सत्यं सर्वतः शङ्करो मया जानामि दुर्लभं वस्तु कथं प्राप्यं मया भवेत् तथापि मनसोत्सुकया तपयते मे तपोधुना हितवेन्द्र प्रमुखान् देवान् विष्णु ब्रह्माणमप्यहं पतिमिप्नाकपाणिं के प्रातुमिच्छामि सत्यता नन्दीश्वर उवाच इत्येवं वचनं श्रुत्वा पार्वत्या हि सुनिश्चितं मुने स जटिलो रुद्रो विहसन् वाक्यं ब्रवीत् जटिलुवाच हिमाचलस्तु देवी का बुद्धिं सविकृता त्वया रुद्रात् बुधानि हत्वा करोषि विपुलं तपः जानामयं च तं रुद्रं शृणु त्वं प्रवदामि ते वृषध्वज स रुद्रो हि विकृतात्मा जटाधर एकाकी च सदा नित्यं विरागी च विशेषत तस्मात् त्वं तेन रुद्रेण मनो योक्तुं न चाहसि सर्वविरुद्धरूपादि तव देवी हरस्य च महं न रोचते हेतु छदिच्छसि तथा कुरु नन्दीश्वर उवाच इत्युक्त्वा च पुनः रुद्रो ब्रह्मचारी स्वरूपवान् निनिन्द बहुधात्मानं तद्रगेतां परीक्षितुं तच्छ्रुत्वा पार्वती देवी विप्रवाक्यं दुरासदं प्रत्युवाच महाक्रुधा शिवनिन्दापरं च तम् एतावधि मया ज्ञातं कचिद्ध्वन्यो भविष्यति परन्तु सकलं ज्ञातमवध्यो दृश्यतेऽधुना ब्रह्मचारी स्वरूपेण कच्छित्त्वं धूत आगत शिवनिन्दा कृता मूढ त्वया मन्योरभून्मम
शिवं त्वं च न जानासि शिवा त्वं हि बहिमुख तव पूजा च कृता यन्मे तस्मात्तापयुता भवम् शिवनिन्दां करोति हि त्वत्मज्ञां यः पुमान् आजन्म सचितं पुण्यम् तस्य भस्मीभवत्युत शिवविधिक्षणं स्पृष्ट्वा प्रायश्चितं समाचरेत् रे रे दुष्ट त्वया प्रोक्तमहं जानामि शङ्करम् निश्चयेन न विज्ञातः शिव एव परप्रभु यथा तथा भवेद्रुदो मायया बहुरूपवान् ममाभीष्टप्रदोद्यन्तं निर्विकार सतामिप्य नन्दीश्वर उवाच इत्युक्तवास्ते शिवा देवी शिवतत्त्वं जगादस यत्र ब्रह्मतपारुद्रः कथ्यते निर्गुणो व्ययः तदा कर्ण्यवचो देव्या ब्रह्मचारी सवेद्विज उन्वचन्मादातुं यावदेव प्रचकर्मे प्रोवाच गिरिजा तावत् वसखीं विज्ञां द्रुतं शिवासक्तमनोवृत्ति शिवनिन्दापराङ्गमुखी गिरिजोवाच वारण्यप्रयत्नेन सख्ययं हि द्विजाधम पुनः वक्तुमनाश्चाय शिवनिन्दां करिष्यति न केवलं भवेत् पापं निन्दा कर्तुं शिवस्य हि यो विशृणोति तन्निन्दां पापभाक् स भवेदिह शिवनिन्दाकरो वध्य सर्वथा शिवकिङ्करे ब्राह्मणश्वेतस्वेत्याज्यो गन्तव्यं तत्स्थलादृतम् अयं दुष्टः पुनः निन्दा करिष्यति शिवस्य हि ब्राह्मणत्वाद्वध्यश त्याज्यो दृश्यथ सर्वथा स्थलमेतदुत्रं हित्वा यास्यमोऽन्यत्र माचरम् यथा सम्भाषणं न स्यादनेनाविदुषा पुनः नन्दीश्वर उवाच इत्युक्त्वा चौम्या यावत्पद्मुक्तिशप्यते मुने असो तावच्छवि साक्षादालं लम्बे पटं स्वयं कृत्वा स्वरूपं दिव्यं च शिवाध्यानं यथा तथा दर्शयित्वा शिवाये तामुवाचावाङ्मुखी शिव शिवुवाच कुत्र त्वं यासि मां हित्वा न त्वं तत्याजया मया शिवे मया परिषितासि त्वं दृढभक्तासि मे नघे ब्रह्मचारी स्वरूपेण भावमिच्छुत्स्वदीयकम् तवोपकण्ठमागत्य प्रावोचं विविधं वच प्रसन्नोऽसिं दृढं भक्तया शिवे तव विशेषतः चितेप्स्तं वरं ब्रूहि नादेयं विधते तव अध प्रभृति ते दास सत्पुभिः प्रेमनिभरे कृतोऽसिं तव सौन्दर्यात्क्षण एको युज्ञाते त्यज्यतां च त्वया लज्जा मम पत्नी सनातनी
एहि प्रिये त्वया साकं दूतं यामि स्वकं गिरम् इत्युक्तवती देवेश शिवाति मुग्धमापसा तपोदुःखं तु यत्सर्व तजहो दूतमेव हि ततः पृष्ठा सा दृष्ट्वा दिव्यरूपं शिवस्य तत् प्रत्युवाच प्रभुं प्रीत्या लज्जयादो मुखी शिवा शिवोवाच यदि प्रसन्नो देवेश करोषि च कृपां मयि पति मे भव देवेश इत्युक्त शिव्या शिवा नन्दीश्वर उवाच गृहीत्वा विद्वत्पाणिं कैलासं च तया ययो पतिं तं गिरिजाप्राप्य देवकार्यचकार सा इति प्रोक्तस्तु ते तात ब्रह्मचारी स्वरूपकः शिवावतारो हि मया शिवाभावपरीशक इदमाख्यानमनघं परमं व्याहतं मया य एतच्छृणुयात् प्रीत्या स सुखी गतिमाप्नुयात् इति चतुरशीत्यवतारः इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीयायां शतरुद्रसंहितायां ब्रह्मचारी शिवावतारवर्णनं नाम त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा